So are you able to see the slides? Yes, sir. And this Word document is also visible to you, or slide is visible only? Now you're able to see slide or a Word document, मतलब a report. Yes, sir. You're saying report or a PowerPoint presentation? PowerPoint presentation. Okay, cool. The other we will do some problems based on risk assessment. Uh, little first we'll see some overview of like what we studied in the week two, and after that we will do some problems. Okay, sir. And I have also prepared one document or a report sort of thing, which will sort of give a complete overview of um, remediation of contaminated site. So it's basically, I'm not sure whether you're able to see it, and let me share it again. Uh, Now you're able to see a report. Yes, sir. Yes, sir. Report. Yeah, this is basically a report which I prepared in during my MTech. So this basically, do you know about the Bhopal gas tragedy? Radha? Yes, sir. Yes, sir. Are you aware of the Bhopal gas tragedy in 1984, Union Carbide, India? No, sir. No, I sir. haven't. So in year 1984, there was a company in Bhopal called Union Carbide. So from there, there was leakage of a gas called methyl isocyanate, and there was other chemicals also. So they got leaked into the area, and it led to death of hundreds of people. So that site got contaminated due to that. So I've prepared a report based on that only, which Okay, is okay, sir. hazardous waste contamination study and remediation strategy in UCIL plant Bhopal. So we will see this, like, it is like a complete overview of, it will give a complete overview of the subject. We will see it like over the course of the course, because we can't do it in one lecture. Okay, sir. You will get a like sort of a complete understanding of the issue, and so
Jado, is there a WhatsApp group or something like that of all these students who are in like uh, studying this particular course? Are you Yes, sir. part of? So there, did they discuss about the problem solving session? No, sir. No one can about it. Acha. Because it's already like 9-7 and not many. So how many students are there? Did you notice how many students are there in that group? Sir, maybe around 50, Okay, 47, 48 students. Yes, sir. okay, okay. Let's wait 5 more minutes, then we'll. Okay, sir.
Hello, sir. Could we start Yes, sir. about it? Okay, sir. Okay. So we will basically do a revision of the risk assessment. What we have to do. In toxicity in human, we basically analyze in two ways. One is in terms of carcinogenic and non-carcinogenic impacts. In carcinogenic impacts, many chemicals are uh, found to have a are found to be human carcinogens like arsenic. It causes skin, lung, and skin cancer. Benzene, hexavalent chromium, vinyl chlorides. These are few compounds which are found to be human carcinogens. Similarly, in carcinogen category or cancer causing compounds, uh, basically they may target some organ or they may target skin, hair. Well, the outline is they're not carcinogenic in nature. They may target your reproductive system. So basically, for both of these tools, we draw a dose and response curve. So in case of carcinogenic compounds, we like very high concentration of the contaminant is taken. So there is a logarithmic curve is drawn. So that high concentration, normally that high concentration won't be uh, available in the surrounding, or that high concentration won't be in direct contact of humans. But we take the high concentration because we need to uh, reduce the time period of the study, right? So that's why we need to take the higher concentration so that we can get the magnified impact by reducing the time of study. So in case of carcinogenic compound, that high study is considered to be is linearly extrapolated. Linearly because it is sort of a conservative approach where we consider that even the minute to minute concentration of that particular compound is will have some carcinogenic impact on human beings or animals where studies done. In the case of non-carcinogenic compounds, we have some initial dose which does not have any impact on humans, non-carcinogenic impact. But after a particular dose, so there will be few terms you might have heard of, just NOEL, NOEAL, and LOEAL. Uh, do you know these two terms, NOEL and LOEL? No, sir. What are they? NOEL is basically no observable effect. This is basically a concentration which will be somewhere here. Let me draw somewhere here. So this this concentration is basically the concentration where no observable effect is seen. This is the maximum concentration at which
no observable impact is seen. If you go Okay. beyond this, if you go beyond this concentration, there will be some impact. So this is the lowest observed adverse effect level. So it is called Lowell. Oh, sorry, Noel. This is called Noel, and there will be some value here, somewhere here. So this will be called Lowell. This is lowest observed adverse effect level. This is the highest concentration where at which there is lowest adverse effect. Lowell and okay. Okay. So this is the like basic theory of what we are going to use in other slides for problem solving. So this is basically a problem solving session where we do some Okay. problems and we see questions. Theory part will be covered, majorly covered in sir slide and in the lectures. Here I will give some brief summary of the theory so that it is you get a revision and then we will do some problems. So this is the first question. You take some time, solve a question on your end, and whenever it is done, you tell me that you have answered, then we will continue with further questions. So this is the first question. You can solve it on your end. You can also ask me questions if in this theory part, if you have some any doubt or like you might have attended the lectures also. If you have some issue, Yes, sir. Yes, sir. I don't have attended lectures, sir. I actually not found the lectures from NPTEL. do you have your login ID when you registered for the subject? Yes, sir. So login ID and password you have, right? Your mail ID and there must be some password which is given to you. Yes, sir. So you just go to the SWAM portal and there you Yes, sir. log in. There you log in with your user ID and password. So you will be redirected to the course page. There you will find. Let me show you. If you are not able to do it in normal, you could also try the incognito. Okay. Now you're able to see, right? Did you get any Excel sheet or something like that for the course? No, sir. So you just go to this SWAM portal, right? You're able to see, right? SWAM portal. Okay. Yeah. You go to login. Yes, sir. You might have registered for the course. Yes, sir. I have Yes. registered. Okay. So you just put your email ID and password. Yes, sir. You just put your email ID password and then sign in.
Okay, sir. So you will be redirected to the portal. Here you can get all the information like whatever courses. If you can go to my courses and you will be redirected to courses which you have registered. Mm. Yes, sir. Okay. So this is the course it is showing, and then you go to the course. Yes, sir. There you have lectures. In week 2, these are the lectures. If you click on risk categorization, you will get the video lectures. Okay, sir. Okay. All the previous done lectures are over there. All are there. Week 1, week 2, and week 3 is Oh, also unlocked. You can do uh, basically your all the reading part from here. Sir will explain all the things, and you okay. will also have to submit some assignments by the end of the week. Yes, sir. These assignment marks will be included in the degree, the certificate you get at the end of the this course. So Okay, sir. do attend these lectures, do go through these lectures. Okay. 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 No problem. So you can try this question, but if you have not attended the lectures, it won't be possible to. But you can try on your end. The other person who has joined can also try. Athar, Athar, am I audible to you? Yes, sir. Yes. So you have attended the last lectures? No, sir, not yet. This is my first lecture. Okay. So actually, this is problem solving session actually. So here this session is like theory part you read in the those lectures, and this session is particularly for problem solving, where I will be taking some problems and numericals. Like if you have not taken the lectures, it will be hard. It will be difficult for you to understand. I will try my best. Okay, sir. No problem. Hello. Okay, Okay. sir. क्लास है ना थोड़ी देर में, फिर वो 9 बजे कॉल करता है। ठीक है. So I will try to explain like the basic part. We will start again, but do attend the lectures because otherwise you won't be able to like understand much stuff. So, Yes, sir. Athar, do you know where to attend the classes? No, sir. So, let me share once more. I have already shown to the Prithviraj. Let me show again. So you go to Swam portal, right? You know the Swam portal, right? Yes, sir. Yes. So at Swam portal, you sign in, you put your username and password, and from there you can go to my courses. Go to course, and here you will have lectures.
So first you must attend these lectures which are uploaded by sir. Right? These are every week there will be around 4 or 5 lectures and there will be one assignment which you have to fill, which you have to give. And on this assignment has some marks which will be considered in the final marks of the course. So please do attend these lectures. You already have 3 weeks of material here. Week one, Okay, week sir. two. These are already uploaded lectures, are sir. Yeah, these are already uploaded lectures. These are not live lectures, but there, I think there will be some live lectures. Most of the material which you need for the understanding of the subject will be there, and some additional lectures probably sir will take in between some live sessions. And for problem Mhm. solving, you have any doubt, you have, and all the numerical and non-numerical problems will be solved in these session, which either I'm one of the session I'm taking, and there must be one more person. You must be getting two mails on for Monday and Tuesday class, if I'm not wrong, or maybe Friday class. So these live sessions, which happen every week, will be specifically for problem solving. Okay, sir. Okay, sir. Okay, huh? So, So, excuse me, sir. G. We have to attend the lectures on Swayam app. No, that it is not like you have to go on particular time. Those are like uploaded lecture. You can watch them in particular week anytime. You can watch all the 5 lectures in one sitting also. So that Okay, is not an issue. we can join the lectures as possible as our convenient time, Haha. and if any queries, we Queries, can ask queries. to Yeah, you in this particular time, seven to yeah, nine. yeah. On Okay, Monday. okay, sir. Thank you. There will be a similar class on Friday also. You must be getting mails. Just check your mail ID which during the registration you gave one mail ID. There you must be getting few mails. Like there is one class on Monday. There will be one more person who is taking class on probably I think Friday. You know? So those you check. There are two people I think. Let me tell you. There is one more person called Sugali Varti Chinnaswamy Nayak. She's taking classes on Tuesday, I think, 6 to 8 Okay, sir. for the same subject, you know. So that also you can attend. There you have two options. So Okay, sir. I will today in today's class I will try my best to convey. Okay. So you are able to see the slides, right? So I will Yes, sir. start again. So you basically have we are basically determining we are doing the risk assessment, right? The toxicity assessment where basically we take two categories. One is we calculated in terms of compounds which cause cancer, any compound which could cause cancer, and other category is other compounds which do not cause cancer, which are called non-carcinogenic or non-cancer impact causing compounds. Okay. So first, if we are taking carcinogenic compound or cancer-causing compounds, there are many compounds. Some of the examples are given in this slides, like arsenic, benzene. Arsenic could cause lung and skin cancer. Benzene could cause blood, bone marrow cancer. Hexavalent chromium could cause lung cancer. These are few examples of carcinogenic compounds, and these are the few impacts of non-carcinogenic compounds. Like impacts like they could impact our reproductive system. They could impact our hair. They could impact the development of human adolescent in adolescent age. They could impact our liver, nervous system, kidney. So for this calculation of these cancer, carcinogenic and non-carcinogenic impact, basically two types of parameters are calculated. Okay. First,
let me take this. So for carcinogenic, for carcinogenic, you calculate value called slope factor. Okay. For non-carcinogenic, we calculate something called reference dose. Which might short form you might see as RFD. Okay, so these are the two values which will which are defined for each and every compound. Like slope factor is defined for compounds those are carcinogenic in nature, and reference dose is defined for compounds which are non-carcinogenic in nature. So how these compound help, or how do we calculate them? So basically, these values are calculated through, like you might have heard of things like these contaminants are tested on rats or rabbits, or you might have heard about this, right? Like like we can't study the impact directly on humans because we are humans. Yes, We sir. don't want to take risks, so we study the impact of these compounds on animals, Yes, right? sir. Understand. Yes, sir. So so after studying on those animals, like mostly rats, rabbits, these animals are used. So from those studies, we get these values: slope factors, reference dose, what is loyal values? These are like if I'm doing a study, like for example, there is one compound. If I'm taking carcinogenic compound like arsenic, and I'm performing a study, so the concentration at which the carcinogenic, like for arsenic to be cause cancer, it might take like few years. We don't know. Like initially, we don't know. So if we perform as like just assume if it takes 40 years to cause cancer, so we can't perform a study for 40 years, right? So what we Yes, sir. do, we increase the concentration. We increase the concentration many folds, and we perform the same study in a smaller duration of time. So Yes, sir. this basically this curve basically represents that because dose is how much concentration we are using. So basically we because at lower end time might be very high, so what we do is we increase the dose and we study, then we interpolate that value for lower doses. So in case of carcinogenic compound, we want, like, because the impact of those compound is like they are carcinogenic, they cause cancer, so we want to be on safer side, so we assume that even the smallest of those compound will cause some sort of impact, right? Yes, sir. And some sort of impact. But in case of non-carcinogenic compounds which are not causing cancer, we do not consider that even the minute concentration will cause some impact. For that this curve is shown, right? For that there will be something called NOEL and LOEL concentration. Like NOEL will be no observed adverse effect level. It is the maximum concentration of particular compound at which no impact is observed. Right? There is no like it is a maximum concentration at which no impact is shown on animal or human on which study is done. Okay. Beyond this concentration, there will be some sort of impact which will happen. And in case of loyal concentration, which is lowest observed adverse effect level, this is the maximum concentration at which minimum amount of impact is observed. Yes, sir. Minimum. Okay. So this is the basic of like risk assessment what we are going to do.
So in this, if you have any doubt, you can tell me. We can discuss. No, sir. No doubt. Atharv, do you have any query I think other way is left, sir. left? Okay, okay, no issue. ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं. अब ये पहला क्वेश्चन है. पृथ्वीराज, you are comfortable with the English, or we can go to Hindi also if you Yes, sir. Both want. prepared. Okay, ठीक है. So English this and Hindi. question is, select the correct uncertainty factor used for risk assessment of non-carcinogenic effects. So basically, if when you go through lectures, you will realize that in lectures, sir has shown like what are the uncertainty factors. Like why we are using uncertainty factors. Let me explain that first. Like if we go to this slide, like uncertainty factors, like we are doing these studies on animals. हम ये जानवरों पे स्टडी कर रहे हैं, है ना? तो Hmm. इस जानवरों से पे जो हमने स्टडी करी है, ये अगर हम इंसानों पे लेके आते हैं, वी आर टेकिंग इट टू ह्यूमंस. सो मतलब कुछ तो वेरिएशन आएगा इम्पैक्ट में, है ना? Yes, sir. Variation. हाँ, हाँ. वेरिएशन आएगा. मतलब अब वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं है. वो कंसंट्रेशन जो रिक्वायर्ड है इन इम्पैक्ट के लिए, वो ज्यादा भी कम भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम सेफ साइड में रहना चाहेंगे. तो Yes, sir. उस चीज को कंसिडर करने के लिए जो क्या अनसर्टेनिटी फैक्टर लिया जाता है, तो वो होता है ये अपना 10. इस चीज को कंसिडर करने के लिए 10 अनसर्टेनिटी फैक्टर लेते हैं, जिसको अपन एक्सट्रापोलेशन फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस बोलते हैं. ठीक है, Yes, sir. Yes. तो ये वाला चीज ठीक है. फिर अब ह्यूमंस भी सारे एक जैसे नहीं होते, है ना? Yes, sir. तो वो ह्यूमन वेरिएबिलिटी भी होगी, तो उसके लिए ये लिया जाता है. फिर ये जो डेटा होता है, अब मैं बता रहा था, इंटरपोलेशन वाली बात बता रहा था कि ये जो डेटा हम निकालते हैं, ये वेरी हाई कंसंट्रेशन पे निकालते हैं ना. Yes, sir. लेकिन Very. ये नॉर्मली हाई कंसंट्रेशन पे निकालते हैं. तो अगर आप उसको लोअर पे इंटरपोलेट करोगे, हाई कंसंट्रेशन स्मॉल डेटा पे, तो अगर नॉर्मली तो वो लोअर कंसंट्रेशन पे लॉन्ग टाइम में इम्पैक्ट कॉज कर सकता है. तो उसके लिए भी हम कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं. ये 10 फॉर यूज फॉर मोर क्रॉनिक डेटा, है ना? Okay, sir. और हाँ, ऐसे ही yes, sir. एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 तब लिया जाता है. अब जैसे मान लो मैंने नो एल निकाली या लो एल वैल्यू निकाली, तो इसमें से हाँ, तुम sir. सोच के बताओ मुझे कि इन दोनों में से अगर मैं कौन सी, जैसे नो एल वैल्यू यूज कर रहा हूँ तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करूंगा, कि लो एल वैल्यू यूज कर रहा हूँ तब फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करूंगा? इसके लिए तो नोवेल का ही लेंगे ना, क्योंकि अब लो जैसे में नो तो ऑलरेडी 50 जैसे लो में. नो एल वैल्यू है, अगर नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल हमारे पास वैल्यू है, तो हम जो जो 10 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो नहीं लेते, क्योंकि ये ऑलरेडी जो वैल्यू हमको पता है, ये ऑलरेडी सेफ साइड पे ही है कंपैरेटिवली. क्योंकि लो एल तो चेंज कर सकती है ना, कंपाउंड टू कंपाउंड, हाँ, यस सर. यस सर. लो तो है ना? चेंज कर लो सकते. एल और बड़ी भी हो सकती है. अब जैसे मान लो कुछ ज्यादा बड़ी वैल्यू हो और हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 ले रहे हैं, तो जो उसकी सेफ वैल्यू आएगी वो कंपैरेटिवली कम कम कंजर्वेटिव होगी, है ना? लेकिन इन केस ऑफ यस. नो एल, ऑलरेडी हम जो एडवर्स इम्पैक्ट कैटेगरी है उससे बाहर है ना? तो हम इस यस. यहाँ से हम पीछे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन लोएल से अगर हम नीचे जा रहे हैं और मान लो सारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के हम यहाँ पहुंचे, तो अभी भी तो कुछ इफेक्ट पड़ रहा है. तो यस. जो सेफर साइड है वो ये है कि नोएल लो. अगर आप लोएल यूज कर रहे हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा एडिशनल, है ना? ओके, तो ठीक. ये है. तो अब ये बेसिकली कौन कौन से आप यूज करोगे, ये डिपेंड करता है कि जैसे मान लो क्वेश्चन में लोएल दे रखा है, तो आप ये वाला फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यूज करोगे, है ना? ये अपन को अगले क्वेश्चन अरे, में पता चल जाएगा. नॉर्मली वैसे ये चारों कंसिडर की जाती हैं, लेकिन बेस्ड ऑन क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या स्टडी की है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो. आप अब तो हमें पता है कि अगर कौन कौन सी वैल्यू, नॉर्मली ये दोनों वैल्यू कंसिडर, तो ये दोनों तो की ही जाती हैं, यस सर. है ना? तो बेस्ड ऑन हम्म. स्टडी फिर आप
पता लगा सकते हो। फिर अगला अगला क्वेश्चन है, द स्टेप्स ऑफ रिस्क कैरेक्टराइजेशन आर गिवन बिलो। ये रिस्क कैरेक्टराइजेशन के स्टेप्स दे रखे हैं, तो ये किस ऑर्डर में होंगे एक बार तुम पढ़ के देखो, मतलब ये आसानी है, तो मतलब ऑर्डर एक बार। Sir, I think second one. सेकंड, फोर्थ, फोर्थ, डेवलप पब्लिक हेल्थ रिस्क एस्टिमेट्स। 4-1. अब जैसे अब इसमें क्या है, जब आप हजार्ड रिस्क असेसमेंट करते हैं तो 4 स्टेप प्रोसेस है ना। Yes, sir. तो Yes, इसमें sir. अब इसमें बेसिकली आप हजार्ड आइडेंटिफाई करते हो पहले, फिर एक्सपोजर असेसमेंट करते हो, फिर टॉक्सिसिटी असेसमेंट करते हो, फिर रिस्क कैरेक्टराइजेशन करते हो, Yes, sir. है ना। तो इसमें जो Yes. पहले आप करोगे, जैसे रिस्क कैरेक्टराइजेशन, मतलब नॉर्मली ये जो 3 स्टेप है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, एक्सपोजर, टॉक्सिसिटी असेसमेंट, इसके मतलब लगभग बाद में आता है। तो इनिशियली तो पहले तो 3 चलेगा कि इंस्टिगेट एंड समराइज द हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, एक्सपोजर असेसमेंट, डोज रिस्पॉन्स असेसमेंट, है ना। Yes. हाँ. रिस्क आप कैरेक्टराइज तभी तो कर पाओगे जब आप पहले आइडेंटिफाई करो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, फिर उनका एक्सपोजर असेसमेंट कि भाई, अब जैसे मान लो जो कोई कंपाउंड है वो सॉइल में प्रेजेंट है, हवा में प्रेजेंट है, पानी में प्रेजेंट है। तो अगर पानी में प्रेजेंट है तो आप पियोगे तो वो इंजेशन में आएगा, है ना। सॉइल में है तो वो Yes, भी sir. इंजेशन में आ सकता है, या फिर अपने डर्मल में आ सकता है। डर्मल मतलब स्किन कांटेक्ट में, है ना। हाँ, yes, sir. तो ऐसे ऐसे कैटेगरी वो करेंगे, फिर डोज रिस्पॉन्स असेसमेंट करेंगे। तो पहले फर्स्ट वाला 3 आएगा, Yes, sir. फिर उसके बाद आपका ये डेवलप पब्लिक हेल्थ एस्टिमेट्स, फिर डेवलप फ्रेमवर्क टू डिफाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क, फिर प्रेजेंट assumption, uncertainties and scientific judgments. Yes, okay. Third one. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिसिटी स्टडीज ऑन ड्रग्स विद क्रॉनिक डेटा अवेलेबिलिटी एस्टिमेटेड दैट। अब ये न्यूमेरिकल है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसी के बेसिस पे हाँ. न्यूमेरिकल है। तो यहाँ Okay. पे हमको बेसिकली, अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो फिर हम सवाल पढ़ें, टॉक्सिसिटी स्टडी ऑन रैट्स विद क्रॉनिक डेटा अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे देखो अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है तुम्हें, कि जो स्टडी है वो रैट्स पे की गई है हाँ, ना। yes, sir. फिर हाँ. क्रॉनिक डेटा स्टडी है ना। हाँ, yes, sir. हाँ. फिर एस्टिमेटेड द, अब यहाँ पे नो एल वैल्यू दे रखी है ना। Yes, sir. फिर अब यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द सेफ लेवल ऑफ डोज, है ना। सेफ लेवल ऑफ डोज निकालना है हमें हाँ, sir. ठीक. फॉर लैड इन केस ऑफ ह्यूमंस। तो हमको सेफ लेवल ऑफ डोज निकालना है। अभी सेफ लेवल ऑफ डोज का फॉर्मूला होता है अपना, सेफ लेवल ऑफ डोज का फॉर्मूला क्या था कि लोएल नोएल वैल्यू, Yes, sir. Lower, lower, lower. लोएल और
नोवेल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूएफ, अनसर्टेनिटी फैक्टर्स। तो अब तुम उसके बेसिस पे कैलकुलेट करके देखो क्या वैल्यू आएगी। लेकिन सर यहाँ पे सिर्फ नोवेल वैल्यू दे है ना। हाँ, तो इसमें वैल्यू में और है, मतलब और लिखा हुआ है ना बीच में, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो। अगर आप लोएल वैल्यू यूज करोगे, नोएल वैल्यू यूज करोगे तो यूएफ चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, अनसर्टेनिटी फैक्टर। जैसे अनसर्टेनिटी फैक्टर में देखे थे ना 20 वाले क्वेश्चन में, ये हाँ ओके ओके ओके। तो इनको मतलब अनसर्टेनिटी फैक्टर के लिए क्या होता है, जैसे मान लो अपना ह्यूमन ह्यूमन वेरिएबिलिटी है तो 10 आ गया। हाँ फिर अगर एक्सप्लोरेशन में एनिमल ह्यूमन है तो इंटू 10 कर देंगे। ओके फिर क्रोनिक डाटा है तो इंटू 10 और कर देंगे। और इसमें आखिरी वाला पढ़ोगे तो 10 फॉर यूजिंग नोएल इंस्टेड ऑफ लोएल, ओके। है ना। मतलब लोअर अगर हम नोवेल ले रहे तो फिर से 10। हाँ, हाँ, तो इसमें ये गलत है ये एक्चुअली, है ना। 10 फॉर यूजिंग नोएल, अगर नोएल यूज करेंगे तो फिर 10 यूज करने का मतलब नहीं है ना। हाँ यही तो वो तो है, अब, सेफ है ना। साइड पे है ना। हाँ, हाँ तो अगर लोएल यूज कर रहे हैं तब 10 यूज करेंगे। हाँ सो ठीक है। तो जैसे मैक्सिमम तो हो सकता है 10 की पावर 4। ओके अब ओके इनमें ओके। से अगर नोवेल दे रखा है तो ये हट जाएगा, हम्म। और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में दे रखी तो और हट जाएगा। नॉर्मली 10 की पावर 3 तो रहता ही है। हाँ तो वो डेटा क्या दे रखा है उसके हिसाब से हम यूएफ निकाल लेंगे, पहले तो सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी अनसर्टेनिटी फैक्टर होता है पर्टिकुलर उसके लिए, और टोटल अनसर्टेनिटी फैक्टर निकाल लेते हैं। और फिर उसके उसको फिर जो फॉर्मूला है नोएल लोएल वैल्यू रखिए उसको डिवाइड कर देते हैं अनसर्टेनिटी फैक्टर से। हाँ सो ठीक है। तो एक बार कैलकुलेट करके देखो। सर 5.6। बराबर। ठीक है, तो ये हो गया अपना 5600 डिवाइडेड बाय 10 टू 10 10। 5.6। अच्छा, अब इसकी यूनिट में कोई चेंज आएगा। सर जैसे नहीं नॉइल, इसमें चेंज क्यों आएगा। वही वही यूनिट हो जाएगी सीधे। हाँ अनसर्टेनिटी फैक्टर की तो कोई यूनिट नहीं है ना। यही हमने हाँ देखा है, वो अनसर्टेनिटी फैक्टर सारे कौन कौन सा ये यूज होगा वो उसके हिसाब से लोअर लोअर वैल्यू अनसर्टेनिटी फैक्टर, तो वो हमको सेफ लगेगा। हाँ सो ठीक। अगला क्वेश्चन, which of the following best describe the use of deterministic approach in risk assessment?
I think it's second, sir. It accounts the uncertainty and variability of the risk. ये होगा provides a single point estimate of risk. Okay. Deterministic. Deterministic. Okay. Hazardous waste management rules ensure which of the following processes when below. ये hazardous waste management देखना पड़ेगा, मैं इसका बता देता हूँ आंसर। और एक तो सेफ Okay. हैंडलिंग है, ट्रीटमेंट डिजाइन होगा, डिजाइन वेस्ट मैनेजमेंट में डिजाइनिंग तो नहीं होगा। नहीं होगा। करेक्शन एंड कन्वर्जन ये होगा, पैकेजिंग स्टोरेज ये है इसका। TCLP, which of the following contaminants can be measured by TCLP test? TCLP मतलब क्या? यार जैसे लैंडफिल में कोई चीज हम डालनी होती है, लैंडफिल जैसे जब भी कचरा जाता है, हाँ। तो अगर हम लैंडफिल में डालते हैं तो मैं चेक करूंगा, कैसे चेक करूंगा कि ये वेस्ट मैं लैंडफिल में डाल सकता हूँ या नहीं, ओके ओके ओके। है ना। तो और उसके लिए एक टेस्ट करते हैं, है ना, TCLP, है ना। तो अब इसमें होता क्या है कि बेसिकली आप जो लैंडफिल के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है ना, यस एनारोबिक डाइजेशन है। यस सर। तो सिमिल उस तरह का ही एसिडिक एनवायरनमेंट उस वेस्ट को प्रोवाइड कराते हैं, उसको कुछ टाइम के लिए उसी एनवायरनमेंट में रखते हैं, और फिर उसमें से जो भी कंटेमिनेंट लीच होते हैं उसकी एनालिसिस करते हैं, और उसको ऐसा मान लेते हैं कि ये हमने भाई लैंडफिल का जैसा एनवायरनमेंट सिमुलेट किया है, तो इससे इससे जो लीच हो रहा है वेस्ट, जो हमने लैब में टेस्ट किया है वही लैंडफिल में भी होगा। तो उस लीचेट अगर जो लीचेट बचता है इस टेस्ट में, उसमें अगर कुछ ऐसे कंटेमिनेंट निकल जाते हैं जो हार्मफुल हैं, तो फिर उस बेसिस पे और फिर उसमें एनालिसिस और होती है। जैसे वो कंटेमिनेंट पानी में मिलेंगे तो कुछ टाइम डाइल्यूशन हो जाएगा, उसके बाद जो वैल्यू आती है, जैसे वो ग्राउंड वाटर में जाएगा क्योंकि लैंडफिल से, हाँ तो ग्राउंड वाटर तो सीधे पीने के भी काम आता है, तो वो वैल्यू सीधे उस ड्रिंकिंग वैल्यू स्टैंडर्ड जो है, जैसे लेड के लिए बात करें तो लेड का जो ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड है उससे कम होनी चाहिए, इस तरीके से। हाँ हाँ उसमें तो रिस्क नहीं होने। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम चेक करेंगे। सेकंड दोनों के लिए होगा, हेवी हेवी मेटल मेटल्स। ऑर्गेनिक, हेवी मेटल के लिए भी होता है। जैसे लेड है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ लेड आर्सेनिक मतलब ज्वाइन कर जाते हैं और फिर लीच हो जाते हैं। ओके ओके ओके। तो TCLP मतलब इसलिए अपन करते हैं कि अगर ऐसा कोई हैवी मेटल या ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हो जो लीचेट के साथ अगर ग्राउंड वाटर में पहुंच गया तो प्रॉब्लम कर सकता है, और उसको उस बेसिकली उस लैंडफिल वाली सिचुएशन को जो लैंडफिल में होने वाली थी ओके। उसको हम सिमुलेट कर लेते हैं एक बीकर में, 2 लीटर के बीकर में। बेसिकली जब एनारोबिक डाइजेशन होता है जब एनारोबिक डाइजेशन होता है तो उसमें एक 3-4 स्टेजेस होती हैं, हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस एंड मीथेनोजेनेसिस। इनके बारे में याद है तुम्हें? नहीं ये तो मैंने पहले नहीं पढ़ा।
लेकिन वो केमिकल की टेस्ट है, वो मुझे मालूम है। अच्छा, जैसे हाइड्रोलिसिस, एस एसिडोजेनेसिस, एंड मेथनोजेनेसिस। एसिटोजेनेसिस एंड मेथनोजेनेसिस। तो एसिटोजेनेसिस स्टेट होती है, इसमें एसीटेट फॉर्मेशन होता है ना। हाँ। हाइड्रोलिसिस में तो जो अपना जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो शुगर्स और कॉम्प्लेक्स वोलेटाइल फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है। फिर ये शुगर्स वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो हैं वो आपके इंटरमीडिएट वोलेटाइल फैटी एसिड्स में कन्वर्ट और बाकी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर फर्दर एसीटेट और हाइड्रोजन और CO2 में कन्वर्ट होते हैं, एसीटो। और फिर यहाँ से एसीटेट जो है वो मीथेन में कन्वर्ट होता है। तो एसिड, तो ये इस TCLP सेट टेस्ट में भी ये एसिटिक एसिड यूज किया जाता है, हाँ, ओके, ठीक है, एसिडिक वही एसिड। एसिडिक कंडीशन सिमुलेट करने के लिए। ठीक है। ओके। तो सिमिलर, तो इसमें आंसर अपना हैवी मेटल भी होगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दोनों के केसेस। ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द रिस्क ड्यू टू फॉलोइंग कार्सिनोजेंस। ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड दे रखे हैं। कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होता है, उसकी रिस्क हम कैलकुलेट करते हैं। उसका रिस्क के लिए फॉर्मूला होता है रिस्क इक्वल टू स्लोप फैक्टर इनटू एवरेज इनटेक वैल्यू। एवरेज इनटेक है ना। तो एवरेज इनटेक हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली, स्लो फैक्टर गिवन होता है हर कंपाउंड के लिए, डिफाइंड होता है। तो ये थ्रू इन्वेस्टिगेशन से निकलता है। तो ये फॉर्मूला है। तो ये यूज करके तुम कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स के लिए रिस्क निकाल सकते हो। तो इनके ये तीन जो कंपाउंड दे रखे हैं इनके लिए निकाल के दो। सर फर्स्ट के लिए तो आएगा नहीं। बस के लिए नहीं आएगा। सेकंड तो सेकंड के लिए 1.23 इंटू 10⁻⁻10। हम्म। एंड थर्ड के लिए 5.7 इंटू 10। यस सर। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो।
तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है कौन सी वैल्यू तुम्हें निकालनी है? सर मैं टी से वैल्यू वो जो हमने पहले निकाली थी वो। हाँ, ये जो पिछली वाली स्लाइड में यहाँ पे तो देखो हमको स्लो फैक्टर और एवरेज इनटेक दोनों दे रखा था, हाँ है ना, इस सवाल में। लेकिन जो हाँ नेक्स्ट सवाल है इसमें स्लो फैक्टर तो दे रखा हाँ स्लो फैक्टर है, दे रखा है। लेकिन एवरेज इनटेक नहीं दे रखा। लेकिन तो नहीं दे रहा। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए ही ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो दे रखी है ये। ओके। तो ये तुमने एक बार पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ लिया एक बार? हाँ सर समझ ली। तो ये फॉर्मूला देखो। सर प्रीवियस क्वेश्चन सर। ओके।
Technology investigation rate. CF conversion factor. FI friction of invested sand that's from contaminated oxide. Friction of sand invested 0.75. Exposure frequency. Exposure duration 72 1 into BW. BW body mass 72 74 divided by 75 and on which time time 70 years. It's 5.816 into 10 raised to minus 6. 10 की पावर -10 में बताओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
58,165.7 into 10 raised to minus 10. ठीक है, सॉल्व करते हैं। Okay. एक्सपोजर ये सारी वैल्यूज तुमने इसी तरीके से डाली हैं, जैसे हाँ यस सर, इसी तरह से 2.975 यस सर वही है। 2.9 RG तुम्हारा 195 हो गया। हम्म, सॉरी, इंजेक्शन रेट ये मिलीग्राम पर केजी था। मिलीग्राम पर केजी इंटू मिलीग्राम पर डे। हम्म, फिर अपना CF कन्वर्जन फैक्टर 0.75 हो गया। कन्वर्जन फैक्टर 10⁻⁻6 है, सही है, लिख लो। हम्म, CF हो गया अपना FI, सॉरी 6। ये हो गया केजी FI हो गया। EF है एक्सपोजर फ्रीक्वेंसी, तो डेज पर ईयर। डेज पर ईयर कितना निकाला तुमने? days per year डेज पर ईयर की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी? तो 72 days दे रहे हैं ना उसमें। 72 डेज दे रखा, तो 72 ईयर्स दे रखा है। शायद इसमें मैं गलत 72 years दे रखे। हम्म सवाल पढ़ो एक बार फिर से, पहली लाइन में कुछ लिखा हुआ है इसमें। स्लाइड ये देखो, footage of week on site
4 days a week on site. 4 into okay, done, sir. देख लिए? हाँ देख ले हाँ तो क्या क्या आ रहा है? सर। मैंने किया था वो डायरेक्टली वो डेज ही लिए थे 72, तो वो वीक से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 डेज वो बोले ना एक वीक में। हाँ, एक वीक में 4 डेज बोले हूँ, तो टोटल वीक कैलकुलेशन डेज पर ईयर है तो 52 वीक वीक होता है, तो 52 इंटू 4 कर दोगे तो डेज पर ईयर आ जाएंगे। 208। ईडी एक्सपोजर ड्यूरेशन, तो एक्सपोजर ड्यूरेशन भी दे रखा है क्या क्वेश्चन में? हाँ 1 ईयर का है ना एक्सपोजर ड्यूरेशन 1। डिवाइडेड बाय बॉडी वेट कितना है? 75 किलो। हाँ 75 इंटू टोटल ईयर 72। तो 72 को डेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 2550। ये तो गलत लिखा हुआ है, दूसरा दोबारा कैलकुलेट। ठीक है 365 26280। करो कैलकुलेट। -4.47 into 10 raised to -8. Which means 447.5 into 10 raised to 10. कितना आ रहा है? 4.47 447 4.47 into 10 into raised to 10 की पावर -8 आ रहा है माइनस -8 -18 -8। -8। ठीक है। और यूनिट क्या आ रही है? यूनिट इस यूनिट मैंने नहीं लिखी। पर डे आएगी केजी पर डे। यही आ रही है ना यूनिट? नहीं, हम्म? लेकिन हमने के हिसाब से निकाला है तो केजी पर डे है ना, केजी पर डे
इसका कंसोलिडेशन है। नहीं, यूनिट तो मिलीग्राम पर केजी पर डे आएगी ना। ओके ओके, हाँ, मिलीग्राम पर केजी पर डे। केजी से मिलीग्राम, मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया, केजी से केजी कट गया, यहाँ ईयर तो से ईयर कट गया, नीचे केजी बचेगा वेट का, मिलीग्राम पर केजी पर डे। अभी ये क्या आया है हमारा, ये तो आ ही आया है अभी। वी नीड टू कैलकुलेट कार्सिनोजेनिक से वैल्यू हमको निकालनी है। ओके ओके। रिस्क, तो रिस्क का फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू आई इंटू एस एफ, एफ टू एवरेज इनपुट। 4.47 इंटू, कितना हो गया, इंटू ऐसे से फैक्टर दे दो 1.5 इंटू 10⁻²। 6.705 इंटू 10⁻10। यूनिट होगी इसकी कुछ, इसकी यूनिट केजी पर डे मीटर ये होगी। दूसरे कौन से? केजी पर मीटर होगी क्या, सेफ स्लो फैक्टर की यूनिट क्या है, केजी, केजी पर डे, केजी डे पर मीटर पर एमजी मिलीग्राम, पर मिलीग्राम। उल्टा है ना बिल्कुल, जो आई की यूनिट है उसके कट जाएगी हाँ पूरी की पूरी, हाँ, तो यूनिट नहीं होगी। यूनिट ही नहीं होगी। ओके ठीक है। हाँ, समझ में आ गया ये, हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक। एक बार देख लो दोबारा से, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। हम्म। यस होगा।
ये लास्ट क्वेश्चन है ये। जो अभी तक जैसे जो पुराने क्वेश्चन किए थे, हम्म, मतलब ये पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या इसमें पूछ रहा है। ground offsite is contaminated with leaches from the landfill. It is having the following components. हाँ सर ठीक है। तो इसमें हजार्ड इंडेक्स निकालना है। हम्म, अपन ने स्टार्टिंग में स्लाइड में ऐसा देखा था ये वाली चीज। हम्म, ठीक है। अभी तक तो हम स्लो फैक्टर के साथ काम कर रहे थे, हाँ, मतलब सब जगह हम कार्सिनोजेनिक रिस्क निकाल रहे थे। हम्म, अभी नॉन कार्सिनोजेनिक अगर पूछेगा तो रेफरेंस डोज आएगी उसमें, है ना। तो हम्म, इस वाले क्वेश्चन में देखो रेफरेंस डोज ही दे रखी है। हाँ रेफरेंस। तो हजार्डस इंडेक्स अगर निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है डी आई डिवाइड बाय फर्स्ट का फिर आता है 48.23, सेकंड का 4.19 इंटू 10⁻⁴। पहले का आ रहा है 4.25। नहीं 48.23 पहले का। मैंने गलत किया क्या। 188 कुछ आ रहा होगा ना। 0.85 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻⁴।
188 1888.88. हम्म DF/RFD सीधे करना है। हम्म, और दूसरे वाले का कितना आ रहा है? दूसरे वाले का लेट मी चेक 238। 162 into 1.62 into 10 is to minus 2 divided by 6.8 into 10 is to minus 6 2328 2382. ठीक है। ठीक है, ये आज के लिए तो इतने ही सवाल है ना? ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। एक एक मिनट रुको। हेलो, कौन है? अब मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँ, वो मेरी वो NPTEL वाली क्लास है। ठीक। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हम्म, तो मतलब आज के लिए तो इतने ही सवाल हैं। पिछले वाली क्लास में ये वाले सवाल डिस्कस किए थे, तो ये प्रेजेंटेशन मैंने अपलोड कर रखी है। ओके सर, किधर मिलेगी प्रेजेंटेशन? ये तुमको लिंक भेजा गया होगा फाइल का। ओके जिसमें गूगल शीट एक शेयर हुई होगी, जिसमें यूट्यूब जो हमने लाइव सेशन है इसकी रिकॉर्डिंग और प्रेजेंटेशन दोनों उधर मिल जाएंगे। दोनों मिल जाएगा। ओके ठीक है सर। यूट्यूब पे वैसे चैनल का नाम क्या है? हाँ, वो मैं यूट्यूब पे जो वो मिल जाएगा, तुम्हें यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, हम्म, तो वो सीधे रिडायरेक्ट कर देगा। चैनल उतनी आसानी से मिलेगा नहीं, नाम मैं बता देता हूँ वैसे। हाँ ठीक है। चैनल का नाम है DS DS NPTEL NPTL PMRF। PMRF। हाँ, ओके ठीक है सर। इसमें सभी के है क्या? सभी नहीं वीडियो अपलोड? नहीं, सबके नहीं, ये केवल मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। तो इसमें ओके ठीक है। मेरे मेरे वीडियोस, मतलब जो अपन ने आज पढ़ा है वो वाला वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, वो मिल जाएगा। हाँ ठीक एक पिछली वाली क्लास का मिल जाएगा। हाँ ठीक है सर। और बस यही है। हाँ ठीक है
और सर लेक्चर्स के लिए भी हमारा चैनल ये होगा या अलग होगा बाकी के, या सिर्फ वो नहीं हमारे नहीं नहीं, वो स्वयं तो मैंने चैनल? बताया था ना, स्वयं पोर्टल पे है। हाँ वही पे मिलेंगे। स्वयं पोर्टल पे ही, स्वयं पोर्टल पे जाके तुम्हें मिलेगा। हाँ ठीक अ, है। स्वयं पोर्टल पे जाके जो लेक्चर्स जैसे बताए थे उस जगह जाके लेक्चर्स, पहले जैसे फर्स्ट सेकंड वीक और थर्ड वीक के भी आ गए हैं तो तीनों देख डालो। हाँ ठीक है ठीक। बाकी नेक्स्ट वीक की क्लास में थर्ड वीक वाला जो पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे, और जो ये टाइम अगर बचेगा तो फिर ये जो पूरा वाला जो एक वो है फाइनल आउटलाइन, ये भी डिस्कस करेंगे। पहली वाली जो वीडियो है वो हम्म। वो मैं अपलोड कर दूंगा, ये वाली भी अपलोड कर दूंगा। वो वाली थोड़ी फाइल शायद करप्ट हो गई है। ओके ओके ठीक है सर। और ये वाली स्लाइड मैं अभी अपलोड कर दूंगा, तो अगर तुम्हें वैसे देखना हो तो स्लाइड लाइट सब कुछ जो ऐसी शीट शेयर होगी तुम्हें। ये ये शीट दिख रही है ऐसी वाली? हाँ ठीक है सर। दिख रही है तुम्हें शीट? नहीं मुझे तो अभी प्रेजेंटेशन दिख रहा है। एक मिनट रुको। ऐसी वाली शीट्स शेयर होगी तुम। हाँ ओके। अब इसमें यहाँ पे ये है मेरा वाला सेक्शन, और यहाँ पे सारी प्रेजेंटेशन होंगी गूगल ड्राइव से। तो इस वाले लिंक पे जाके तुम ये स्लाइड्स देख सकते हो, और यहाँ पे यूट्यूब लिंक आ जाएगा। ओके तो यहाँ से यूट्यूब सीधा एक्सेस कर सकते हो वीडियो। ओके ओके ठीक है सर। ठीक है, आज के लिए चले जा सकते हाँ ठीक। हो। थैंक यू सर। हम्म।